अरे फोन पकड़ ले। Welcome to No Filter Cricket. There is something. So I'll explain what the move is all about. So in short, the contract cricketers are not allowed to take part in foreign leagues, and those who have retired from all forms of cricket, including the IPL, can certainly go overseas to play. Now, that was the rule so far, but now there is going to be a catch. And what is that catch? So, BCCI Secretary Jai Shah has issued a statement saying he wants to prevent the trend of predetermined retirement. And a 1 year cooling off period might be introduced for a retired player. Why is this happening? It is happening because the answer is simple, that BCCI does not want any other league like the IPL to come up. And it is also unhappy that some foreign league teams are being funded by IPL owners, and that amounts to loss of revenue. Keeping me company is CS, and with him, there is never a dull moment. Welcome to the show, CS. I believe you Thank were you. caught in the jam today. All right. Yeah, all well, all well. Okay. So, CS, what is your reaction now? I want to ask you a very simple question, which is that when a player wants to go overseas, they do it under two conditions. One is that they are either not being picked for quite some time for the national team. They may feel that they'll never make that grade. And two, somebody like Ambati Raidu, who is nearing retirement and who obviously whatever the avenues he had, that is basically over. So why these are these restrictions being piled up now also suddenly? Of course, it has to be ratified, but I'm quite sure it will be, and it is so unfair to all these players. Absolutely, and this is just a simple, might is right. आपके बीसीसीआई के हाथ में डंडा है, उनके पास माइट है, उनके पास पैसे की पावर है, and they want to prevent everything else. If you remember that Supreme Court case of 2014, the spot fixing case, Supreme Court was very clear about when the ICL matter came on. That was started by the Z Group. If you remember that, Supreme Court said who stopped them from when something happened in between argument. So Chief Justice was very clear that there cannot be any blanket ban from the BCCI or on any kind of league. They don't own cricket; they own the team, and that also the team India picked by BCCI. It is not like, because BCCI always believes that they are not under government of India. They don't take any funding from them, so they are not binded by any kind of regulation. So Supreme Court also said who stopped them. So somebody, there was argument. So my point was कि जब बीसीसीआई के पास ये पावर ही नहीं है कि वो कोई भारत की टीम ऐसी नहीं है, वो कहते हैं ये बीसीसीआई की टीम है। ये बात अलग है कि हम इमोशनल होकर इसको भारत की टीम मानते हैं। तो जब बीसीसीआई के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, तो बाकी के लोग सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको भी मालूम है यहाँ पर एक अलग तरह की क्रिकेट की गुंडागर्दी चल रही है। वो किसी और लीग को फ्लरिश नहीं होने देंगे, और वो तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि, ऑब्वियसली एक और भी रीजन है कि मिस्टर जय शाह यहाँ पर है। जय शाह के मतलब है कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता, उनके सामने कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पीछे होम मिनिस्टर जी का डंडा है। तो इसलिए इट्स वेरी सिंपल, क्लियर कट केस। हम किसी को सबको बर्बाद कर देंगे, सिर्फ अपने घर में दिया जलेगा और किसी को नहीं खेलने देंगे। लेकिन एक चीज है इसमें, वो ये है कि जो बाकी के लोग हैं, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और वेरी क्लियर इस बार कई लोग स्किप किए आईपीएल कि हम अपना एशेज के लिए ध्यान देंगे, और कई टीम्स ऐसा करना भी चाहती है। अब प्रॉब्लम है कि हर एक के पास पैसा नहीं है। श्रीलंकन बेचारे भीख मांगते हैं, वेस्ट इंडीज वाले भीख मांगते हैं कि हमें प्लीज ले लीजिए। पाकिस्तान रोज इसीलिए बात पे लड़ाई हुई थी 2010-11 में, जब उन्हें पिक नहीं किया था कि हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं लिया जा रहा। वो सब पैसा कमाना चाहते हैं। पॉइंट इज, जिस दिन बाहर के प्लेयर यहाँ आना बंद कर देंगे, अगर इसी तरह का आपका एटीट्यूड रहा, तो आपकी क्या रहेगी? आपकी तो रणजी ट्रॉफी जो क्या बोलते हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी की तरह रहेगा। जी, मैं इस पॉइंट पे आपके पास वापस लौटूंगा जो मनी एंगल है, लेकिन पहले आपसे ये समझना चाहता हूं कि जय शाह ने एक फ्रेज यूज किया है that this move is being considered and by the Apex Council, and we want to formulate a policy. Why? To prevent, and I quote, to prevent the trend of predetermined retirement.
Now, it's a very simple thing. Like senior bureaucrats, when they retire, they head for these cushy foreign jobs, which they have cultivated before. Some become governors, and there's a lot of this trend happening. And this was also discussed earlier, that there should be a cooling off period. But compare that to a cricketer who may be struggling even at the Ranji level or in first class cricket, having played all these years, given their best. Now, what is predetermined trend of retirement? I just fail to understand. देखिए जबरदस्ती की चीज है अरूप. Can you name me any single cricketer in India who has pre-retired? Ambati Raidu was a different case when he was not picked for the World Cup squad. He announced in a अपना रेस में उसमें कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो वापस ले लिया था और फिर से खेलने शुरू हुए थे. सो अदरवाइज एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है. प्लेयर्स अगर ऐसा कोई केसेस है, ट्रेस्कोथिक का है, वो ग्रैम स्वैन का है, वो इंग्लैंड में है बिकॉज दे हैड मेंटल इश्यूज देयर. दे हैड इश्यूज स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली. बट अदरवाइज एक भी प्लेयर ऐसा आप मुझे इंडिया में नहीं दिखा सकते. नंबर वन. नंबर टू, टू प्रिवेंट देम फॉर व्हाट? क्रिकेटर की एक लाइफ स्पैन क्या होती है? एक एवरेज क्रिकेटर जो बॉलर है उसके करीब करीब 10 साल, अगर इंजरी ना हो, और बैट्समैन की 14 से 15 साल. आपका ये तो लाइफ स्पैन है. आप उसमें ही अगर उनको रोकोगे या उसके बाद एक कूलिंग ऑफ लगा दोगे, अगर मान लो एक कोई 34 में एक बॉलर रिटायर होता है, 1 साल का उस पर कूलिंग ऑफ लगा दे, उसको कौन पूछेगा? आज कोई जहीर खान को पूछेगा क्या? अगर आप देखें, या युवराज सिंह को? नहीं. अब तो सिंपल सी बात है, आप जब खेलते हो, जैसे अगर आप शुरू का फर्स्ट आईपीएल ध्यान दें तो ऑस्ट्रेलियन जो गिलक्रिस्ट, हाइडन, ये सभी लोग रिटायर हुए थे, शेन वॉन, और वो आईपीएल में सीधा आए थे. लेकिन वो भी प्री मैच्योर नहीं था, लेकिन वो उस टाइम पे हो रहा था ये सब कुछ, और सबकी परफॉर्मेंसेस खराब हो रही थी, डिप हो रही थी. कैच छोड़ा गिलक्रिस्ट ने, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली. तो उस तरह के हालात थे. तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है. लेकिन यस, आई डू एग्री कि प्लेयर्स के लिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स हैं, उन पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोक होनी चाहिए, जो इंडिया में ही नहीं है, बाकी सब जगह पर है. इंडियन बट प्लेयर्स पहले आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद इंग्लैंड टूर में डब्ल्यूटीसी खेलने जाते हैं. वो एक हम गलत लोग हो सकता है, लेकिन हम ये लोग गलत नहीं हो सकता. प्लेयर्स की बात ही नहीं कर रहे. हम तो ये कह रहे हैं कि somebody like let's take the case of Unmuk Chand, who was a celebrated हाँ. under 19 captain. Now he struggled here consistently. Then he gave up. He's gone to the US away to play the major league cricket MLC. And we had done a discussion with you earlier also, that there are at least 10 such players who either are from India, or some of them are with Indian backgrounds. Some have played in the IPL and they are there. And the interesting part is that these franchises in several of the foreign leagues, including the SA20 in South Africa, CPL, Caribbean Premier League in the West Indies, ILT20 in the UAE, besides the MLC in the US, some of the teams are being funded by IPL team members, and the BCCI hasn't taken too kindly to that. Now, my question to you is that you can't do anything to stop that, can you? मेरे दोस्त हंसी आती है अरूप. Point is, everybody cries that they are in the losses. They can't break even after 5 years, 4 years. This was the reason till 3-4 years back. Now the teams have been sold for 7,000 rupees or 6,000 crore rupees. Two teams of Indian IPL. So where is this money coming from? And if our owners, if our team owners are so poor, or they can't afford, or they can't break even, how can they go and invest there? So there is so much happening, in between. ये बहुत सा ऐसा घालमेल है आरोप, जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता. यहाँ का पैसे लॉसेस का हम बाहर जाके कहाँ कवर करेंगे, या बाहर के लॉसेस यहाँ क्यों करेंगे? ये सब कुछ बहुत बड़ा घालमेल है. बट यस, इस टाइम जैसा को बोलने वाले कोई नहीं है. उनका जो मन होगा, या ऊपर से कोई डिक्टेशन आई होगी, वो पूरा कर रहे हैं. We are also now joined by Sandeep Mishra, sports editor of NNI. Sandeep, we were basically discussing with CS and me about this entire hoopla being created by the BCCI, which wants to review their policy of letting retired players go and play overseas. They want a 1-year cooling off period, and I'm also now told that they want that the players should take a NOC. I find that even more ridiculous than the cooling off period. But what is your initial reaction? It is just the worry that there should not be another IPL somewhere else in the world? Well, honestly, when a sport is going through so much of change, when you look at T20, I mean, it's
It's probably is the future of the sport in so many ways. There is also a school of thought that yes, the BCCI probably feels that they want to remain as powerful as they are right now. But nothing happens like that in the world of sport. At the end of the day, any player is free to go and play wherever he wants. And by a similar logic, let's just look at another example and compare it with the IPL is the EPL. Now, EPL is the richest league in the world. It's the most powerful league in the world. But let me ask you both gentlemen a very, it might seem a very ridiculous question, but have you ever seen an EPL chairman or anybody giving interviews, sitting out there, enjoying himself? Have you ever seen all of that? You will never see anything of that sort, you know. And I'm not honestly comparing the great Jay Shah with anybody else, whether it is Adam in the NBA sphere, where he's the director and the chairman of the entire NBA league. But if the EPL starts stopping their own players from going to the Italian league or from going to the Spanish league or from playing in any other league in the world, it probably will set off a furor in that part of the world. That at the end of the day, every player has a right to earn money. Every player has a right to play wherever they want to play. And I think this probably, and I don't know if Shekhar probably agrees to this or not, but maybe in the next couple of years or 3 years, you'll probably see this as a plateau. You know, this is going to plateau out in a sense that the BCCI will have to agree to the players and say that, okay, fine, you know, this rule now seems a little irrelevant when the very owners of the companies or the owners of those very clubs are allowed to go in and have teams abroad. Why not the players go and play abroad? At the end of the day, I think it just showcases Indian players' skills, talent to a complete different spectrum across the world. So to me, it seems very surprising that they are even thinking of something like this. Completely. CS, you want to react to that? Then this is ridiculous again, you know. आप किसी एक के करियर को आप विराम देना चाहते हैं just because you know he is not playing for you or he is not taking permission from you. First of all, you have you know introduced that system of getting NOC. So give that NOC na. If this player is not required for the team India, oh that should be the only criteria. If he is playing somewhere, you know, series somewhere or WTC for that matter, I was telling you, not even a single player has taken a leave or you know kind of any kind of beach mein break to play to prepare for the WTC. We lost by an innings at 2009 at 209 runs. यू नो तब तो जयशाह जी कुछ नहीं बोलेंगे, बट जयशाह जी बिकॉज पैसा बनेगा और कुछ उनको ये शायद दिखाना कि मेरे वक्त में सबसे ज्यादा पैसा आया, तो उनको ये और वैसे भी मैं आपको सच बताऊं, क्रिकेट का एबीसी नहीं आता, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई क्रिकेट के बहुत ज्यादा कोई बड़े कमाल का वो आया था. इनफैक्ट इन वन ऑफ द सम क्रिकेट फेलो, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू समबडी वेरी सीनियर बीसीसीआई गाय, I was asking him about Jay Shah's background as a cricketer. So they were laughing. They were saying कि जब एक मैच होना था between officials and some former players, जो तो उनको बैट पकड़ना सिखाया था किसी एक फॉर्मर प्लेयर ने वहीं पर, जिनको खुद भी इंडियन टीम में वो टूरिस्ट की तरह चलते रहे, तो उन्होंने बैट पकड़ना सिखाया था और कहा था कि जी इस तरह कर लीजिए, और अजहरुद्दीन का उन्होंने विकेट भी ले लिया था, उन्होंने जबरदस्ती दिलवा दिया था, सब लोगों ने बड़ा क्लैप किया था. सो दैट इज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड. ऐसा नहीं है कि इनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड हो या कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कहीं पर सेटल करना था उनको सेटल कर दिया. दिस इज ए काइंड ऑफ जो कहते हैं ना एक पार्किंग प्लेस है उनके लिए टू गेट द बिगर थिंग्स इन लाइफ. Okay, let's move on and let's take a look at some names and the leagues that they are associated with. So the Pathan brothers, Irfan and Yusuf, Stuart Binney, Shrikant and Parthiv Patel, they were announced to be part of the Zim Afro T10 League. Then Yusuf and Robin Uthappa were also part of the IL T20 League in UAE. Ambati Raidu, like I mentioned earlier, has joined USA's Major League Cricket. Excuse me, and that is going to be launched anytime soon. Unmukh Chand is also part of the MLC, among a few others. And over and above where this trend is being considered, that like we have been discussing, Sandeep, that the players who are obviously heading out, they only fall in two categories. One is they don't have a future, or second, they're just not being picked, and neither are they making that kind of money. So whether it is an NOC, whether it is basically all these steps to create roadblocks,
To me, it sounds more and more ridiculous, and it is also unsporting. But what about the pension angle? Do you feel that comes into play somewhere? Yeah, of course. I mean, at the end of the day, probably the players are also a little afraid of that, that something's going to be cut out. But as I said earlier, I think there's going to be the time is going to come when with the T20 expanding at such a rate, where leave apart the Ashes, leave apart Australia coming to India and playing very close test matches, irrespective of the wickets that they are given. But there are only three or four test nations that can probably play at that level, where you're getting close games, where you're enjoying the sport, where you're probably at the edge of your speed, of your seat, whether it's the fourth day or whether it's the end of the fifth day. I think at some point of time, and I probably will not agree to a point where Shekhar said that, you really need to play cricket to be part of the administration. Yes and no, but for me it's like, if you are expanding, if you're making the sport more popular, if you're making it richer, it's great for the game. But you are not the godfather of world cricket. Let's look at that difference also, that you're going to control sport in such a way that you are stopping people's lives. That somehow doesn't sit well with anybody. If Australia is not saying anything today, if England is not saying anything today, if some of the other nations, South Africa, are not saying anything today, it's because they are also milking the Indian cricket system to an extent. Yes. The day we again come down to a particular level, and that level will come, it's already arriving at the test level. We haven't won really too much unless we cook up our wickets on our own country. It gets very difficult to win test matches. I mean, Australia, whether they play in India, they're playing very close games with us. Whether they play in Australia, they are still playing close games with us. Yes, we also win in Australia. Let's not put that also on the back burner. But Australia also goes and wins in England. England also wins in New Zealand, also wins in Australia. So once that level becomes very equal, then what are we left with? We are left with T20. And then it becomes very difficult. And the time will come, Arup, that the T20 owners, the main teams in this country, are going to dictate what the policies are. And at that point of time, neither the BCCI, neither Jaisha are going to have a say. Because at the end of the day, even understand the English Premier League, all rules, anything that changes is run through the entire gamut of all the teams and all the owners. Only when there comes a unanimous decision that yes, this is going to benefit the sport, then it will happen. Remember the second point and my last point, they are all business owners. They all want to make money from the franchises. And if that is somehow being stopped by controversial stories or by such moves, I think in the longer run, these very owners will tell the BCCI, please go back, take a step back, and let these players play abroad, because that is exactly what the team needs. Okay, let's wind up the first part and go on to the second part of the show, which basically involves the new chairman of selectors, and that is Ajit Agarkar. So the moment Ajit Agarkar got selected, there was a lot of positive media around him. They said that he's a guy who can take tough decisions. He has the grit. And as selector of Mumbai, he was responsible for the dropping of Surya Kumar Yadav from the Ranji Trophy team. Then, of course, there was a line that ultimately he had to resign, which doesn't augur too well for any selector. Well, but he is known as a man who knows his cricket. And some of his stats, I'll go through it quickly. 26 tests, 191 ODIs, 4 T20s, and the experience of playing and coaching in the IPL. No other selector before Agarkar played in the shorter form of the game. They were, in fact, let me correct that. All the chief selectors before Agarkar only played ODIs and tests, whereas he was part of the Indian team that lifted the inaugural World T20 in 2007. But CS, let's talk business. And the first thing, the bouncer that came his way was that what is he going to do with Virat Kohli and Rohit Sharma in the T20 format? Understandably, they are not part of the team in West Indies, but that doesn't necessarily end their careers in T20. And who's going to bite the bullet? That's a very interesting question. Or in fact, Arup, mujhe, if I compare Ajit Agarkar with any other selectors apart from Dilip Venksankar, which I have a great regard,
for but I don't see any difference in Ajit Agarkar or anybody else. They are as good or as bad as their previous guys were. सो अजीत आगरकर के अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़े कमाल के डिसीजन लेंगे और ये कोई बोर्ड को बाईपास कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज मैं क्रिकेट से ज्यादा क्रिकेट पॉलिटिक्स करता हूँ, एंड लेट मी टेल यू, ये ठीक वैसा ही साबित होंगे जो कि बाकी के लोग जिस तरह से हो रहे थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि क्रिकेट खेलने, थोड़ा क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, जो थोड़ा क्रिकेट का एक जो लेटेस्ट, जो आपने टच की बात की, T20 से भी टच रहा है, तो शायद थोड़ा सा असर उसका दिखेगा। और वो पहला असर इन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम में दिखाया, जिस तरह से नए बच्चों को ले गए और पुराने लोगों को थोड़ा दरकिनार किया है। सो दैट इज द ओनली पॉजिटिव आई कुड सी इन द इमीडिएट रन, बट आई थिंक दैट हैज ऑल्सो कम फ्रॉम द टॉप। और इनफैक्ट मैं आपको एक एक ये भी किस्सा सुनाऊं कि हमारे सिलेक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि टीम मीटिंग से उठते हैं, हम उसे नाम मत पूछिएगा, लेकिन समझ जाएंगे जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम। टीम मीटिंग से उठते हैं बहुत शोर मचाते हुए, हो गया हो गया हो गया, और टीम को ये कागज पकड़ाने की किसी को कोशिश करते हैं कि ये भेज दीजिए द ग्रेट ग्रेट जो ऊपर के आकार लोग हैं उनको, और अप्रूवल ले लीजिए। और थोड़ी देर बाद उनको कागज वापस मिलता है और उनकी बोलती बंद हो जाती है। देर मतलब कि 4-4 चेंजेस होते हैं टीम में और उनकी बोलने की हिम्मत नहीं, और वो कागज लेकर के फिर किस तरह से जाएंगे, तो किसी और के हाथ भिजवाते हैं और साइन करवाते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिलेक्शन जो सुनने में भी आ रहा है और जो हमें हमें मालूम भी है इस तरह से होता है। और ये बिल्कुल इमीडिएट मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, पुराने में और भी बहुत कुछ होता रहा। तो आपको लॉन्ग जो आपका जो है, जो जो आपका हॉराइजन होना चाहिए, या जो आपका जिस तरह की थिंकिंग होनी चाहिए फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, दैट इज ऑब्वियसली टू लुक अप टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, जो अभी इमीडिएटली वाले नहीं, इसमें तो जो होगा इसी टीम से, लेकिन इससे अगले वर्ल्ड कप्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या एक नेक्स्ट जो 2 साल की क्रिकेट साइकिल है उसमें WTC फाइनल में अगर आपको जाना है या जीतना, इस जिंक्स को तोड़ना है 2 बार फाइनल हारने का, तो उसके लिए होनी पड़ेगी। उसके लिए अजीत क्या तैयार है? क्या अजीत को डिक्टेट्स नहीं मिलेंगे ऊपर से? क्या अजीत आगरकर में इतना मादा है कि वो जयशाह या किसी और को कन्फ्रंट कर सकेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। सो मतलब कि मुझे कोई खास इनके बारे में नहीं बोलना, ना मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ इनके आने या जाने से। इट्स जस्ट ए पार्ट, इट्स जस्ट ए नॉर्मल अनदर पर्सन इन द इन द चेयर। Sandeep, you agree with that? Yes, to a point, surely, because I mean, there's so much of pessimism that comes in when you talk about Indian cricket, apart from the performances that you see in the IPL or in the Test arena or in the ODIs. But when it comes to selectors, when it comes to coaches, you sometimes do wonder that, what is the board's job? If you just kind of look at that, a board's job is to ensure that everything is being given to the players, the structure of the entire cricket, which is sub junior, junior, whatever tournaments that are being done properly, the stadium is being looked after properly, that one can go into Firozshah Kotla and say that, hey, this is the best stadium in the world. But can you say that? No, you can't. Can you go to any part of this country, into any stadium, and say, this is the best stadium in the world? I don't know. Maybe not. You really can't compare it with the rest. I think that's the board's job. The rest of the job, as Shekhar says, is left to the selectors. But can the selectors do it? Can they stand up to these politico slash bureaucrats slash from a particular family kind of a nexus that comes into cricket? I'm seriously doubtful, because how do you stand up? I mean, even if we imagine that, it's so difficult. I mean, can anybody stand up to a politician in this country? I mean, if that politician is part of a board? No, you really can't. I mean, you look at any board, you look at athletics, you look at football, you look at hockey. I mean, in fact, today itself, somebody was telling me that UP is going to have more players in the Indian hockey team because a certain chairman of selectors, he comes from Uttar Pradesh, So then I hurriedly go through the list and I see, okay, fine, the junior Indian national team is captained by a UP player. Now, it didn't strike me, honestly. It's only when somebody told me that, hey, just look into it a little deeper. So what I'm saying is, you have Dilip Tirki as the president of Hockey India and you have RP Singh as the chairman of selectors. Now, who is more powerful? But here it is the opposite. But in cricket, it's completely parallelly, completely going the other way. So
I agree to a point where Shekhar is saying that it's so difficult for Ajit Agarkar to come and say, this is my list. But can he say that, okay, I'm saying I refuse your list, which comes in from the BCCI? No, I don't think it can be possible. CS, your reaction? You wanted to say something? दो चीजें मुझे ध्यान आई थी। एक तो जिस तरह से क्या हॉकी वाला भी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी ये किसी ने बताया था। एनीवे, प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट के साथ द लॉसेस ऑफ नॉर्थ जोन, चेतन शर्मा की एक गलती या जैसे भी कहो बेवकूफ़ी मैं कहूँगा, जो जिस तरह के उनका स्टिंग जो हुआ गलत हुआ। स्टिंग किसी का भी नहीं होना चाहिए, इससे प्राइवेट मैटर बिटवीन टू साइड्स, बट एनीवे ही लॉस्ट हिज जॉब। बट नॉर्थ जोन से कोई सिलेक्टर ही नहीं है। देर इज नथिंग कॉल्ड एपेक्स काउंसिल, जिसका कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा ढांचा बनाया था। अब तो मुझे मजाक लगता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे, टाइम वेस्ट किया हम लोगों ने भी वहाँ पर रोज जा करके। बट जो ढांचा था कि एपेक्स काउंसिल इतनी पावरफुल होगी या उसमें अच्छे लोग होंगे, अब तो कुछ नहीं है। इट्स ऑल हिज मास्टर्स वॉइस होता है। एचएमवी के सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई पूछ ही नहीं है वहाँ पर, कोई पूछता ही नहीं है उन लोगों को कौन बना रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपके वेस्ट से 2 सिलेक्टर्स हो गए, वेस्ट के ही सारे अब लोग आया करेंगे, नॉर्थ का कौन ध्यान देगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरिजिनल आइडिया था टू गेट रिड ऑफ दिस जोनल कोटा, वो ये था कि 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होगा। वो इसलिए होगा कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, किसी भी जोन के ना हो, कहीं से भी पिक कर लो रैंडमली, एंड पेड जॉब हो सिलेक्टर्स की। लेकिन अब क्या हो रहा है, तो उसको 3 to 5 करवा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो हर एक चीज को ही छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद सब कुछ जो करवाना चाहा हो गया। अब वो 5 में क्या, जब 5 का ही सिस्टम होगा तो लेट्स फॉलो द जोनल सिस्टम ना। एटलीस्ट मुझे दिल्ली के प्लेयर का पता होगा, आपको यूपी का होगा, किसी को साउथ का होगा। सो नाउ देयर इज नोबडी फ्रॉम द जोन, फ्रॉम द नॉर्थ जोन। तो वो एक लॉस होगा। और दूसरा, अजीत आगरकर को अगर आप सभी लोग कहें या सभी लोगों को, जो लोग इनका करियर फॉलो करते हैं, ही बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप में अब तो यही बात चल रही है कि कब उस ग्रुप के जो चीफ है उनका बेटा कब खेलेगा इंडियन टीम, अब उसके लिए कब खिलाया जाएगा। मीन अब तो इससे सिंपल, जिस दिन इनका जो पहले से ही मालूम था ये बनने वाले हैं, और जिस दिन बने उस दिन से मुझे 1-2 बॉम्बे से ही आया कि अब देखिएगा कब गोवा से ट्रांसफर होगा बॉम्बे के लिए एक प्लेयर, फिर वो आईपीएल के तो ऑलरेडी खिला दिया, अब उसको इंडियन टीम में कब पुश किया जाएगा। सो दैट्स अ काइंड ऑफ, मीन ये सबको मालूम है, कोई नई चीज कुछ भी नहीं होने वाली है। यारो लेट मी टेल यू, इस क्रिकेट को मैंने 30 साल से बहुत ढंग से जिया है, परखा है और इसके बारे में लिखा है। कुछ चेंज नहीं होता, ओनली चेहरे चेंज होते हैं। लेकिन एक जो डिफरेंस था पुराने लोगों में, वो क्रिकेटर्स को थोड़ा सा मौका देते थे कि आप लीग को सुधारिए। आप जो कहते हैं कि जैसे दिलीप वेंगसरकर, मैं रिगार्ड क्यों करता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने एक विजन दिखाया था उस वक्त पे, उस प्लेयरों को जो उन्होंने सेलेक्ट किए, बहुत लंबा खेले, 10-12 साल खेले, और उनके सामने शरद पवार हो या कोई भी हो, वो क्रिकेट की बात नहीं करते थे, वो कुछ भी कह देते थे कि दिलीप ये करो वो करो। लेकिन क्रिकेट में दिलीप वेंगसरकर ने अगर कह दिया ये होगा, तो वो होकर के रहता था। और लास्ट चीज, संदीप से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। संदीप कहते हैं यहाँ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं है। संदीप मेरे साथ चलो फिरोजा कोटला में, सामने खड़ो। मैं एक बार खड़ा हो रहा था, इतना प्यारा एक मेरे साथ फॉरनर खड़ा हुआ था, ओ दिस लुक्स लाइक ए कार पार्किंग। अरे वर्ल्ड की बेस्ट कार पार्किंग 180 करोड़ में बनाई है। आप क्या मजाक, आपको पता सता कुछ नहीं है बोलते हो। अच्छा वो बनाई है, अब आप उसके बाद देखिए, अब 50 करोड़ बीसीसीआई हर स्टेडियम को दे रहा है रेनोवेशन के लिए। अब तो ऑब्वियसली उन्हीं 10 को देगा, तो बाकी के स्टेडियम यानी बर्बाद कर दोगे। इसका मतलब वहां पर आपके मैचेस कम होंगे, नंबर 1। और दूसरा, दिल्ली में सुनने में आया, मुझे अभी क्लियर तो यहाँ के लोग ही करेंगे, फिलहाल तो और केसेस में फंसे हुए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट और बाकी के सब केसेस में। वहां पर 125 करोड़ की रेनोवेशन हो रही है, जिसमें ठीक क्या हो रहा है, कुछ एक सीट्स को ठीक कर रहे हैं और टॉयलेट्स। ये वही टॉयलेट्स है जो आज से 5-7 साल पहले मैंने एक स्टोरी की थी कि 40 कुछ करोड़ टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन पे लगा है। अब उन्हीं टॉयलेट्स को फिर से तोड़कर आप 125 या मान लीजिए 50 करोड़ के भी अगर आप टॉयलेट कर रहे हैं जो मिल रहा है। Yes, you have made your point. Now let me come back to the last question or rather pointer that I want to make on the show, and then I'll toss it to you both gentlemen. We're running out of time. So when it comes to the selectors, now in Sunil Gavaskar's playing days, somebody or the other referred to them as a bunch of jokers. Now Sunil Gavaskar himself called the MSK Prasad-led committee lame ducks after Team India's semi-final exit from the World Cup in 2019. The reason being the inclusion of Vijay Shankar and the omission of Ambati Rayudu, which we have
discussed enough in the past, and many felt that if India had picked Ambati Rayudu, it would have made a world of difference. That never happened. So when we are talking about the selectors taking a call, and both CS and you have made this point repeatedly that a certain diktat has to be followed. It's a preset diktat. So what is the room for maneuver? I mean, that is the last point that I want to hit you both with. I honestly think there's only 5 to 10% room for maneuver. That's the maximum that the board probably will give you, and that's what you probably get. Those 1 or 2 or 3 players that you feel, and that they become the kind of the headline. The youth gets a chance. This player who hasn't gotten selected for the last 3 years probably has been put in, so the selection committee feels that they have done something good. But the rest keeps moving the same way. I mean, you just read Sunil Gavaskar's interview recently, probably today or yesterday, where he's pointed towards the players from the West Indies too. But again, the former players, I think, between their columns, between their commentary, between what they tell the media or between what they tell different channels, they keep contradicting themselves because they keep forgetting what they said day before yesterday. And it becomes a problem sometimes, because what Sunil Gavascar says today, he completely contradicts in probably 2 months down the line because he's forgotten. And the same goes for most of these guys. I mean, there is no consistency in what they say and maintain. And then that probably is preyed upon by the BCCI itself. So, okay, yes, it's only 5 or 10% maneuver. That's the only percentage that you can look at. Quick comments, yes. Because संदीप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, because मैनूवर करना तो दूर की बात है, रादर मरके आई वुड से दे डोंट टेक देम सीरियसली. ये मैंने पहले राजीव शुक्ला जी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कहा था, अब मैं कहता हूँ फॉर दैट मैटर नन ऑफ दीज क्रिकेटर्स. क्योंकि मैंने वो भी दौर देखा, अब नाम फिर से मत पूछना, कि जब शशांक मनोहर प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेयर को किसी एक जगह से हटा दिया था, तो एवरी वीकेंड पे वो नागपुर में खड़े रहते थे उनके घर के बाहर, जस्ट फॉर वन कि उनसे बातचीत हो जाए 5 मिनट, और 2 और 3 वीक उनको शायद मिलने नहीं दिया था. फिर उसके बाद मिला और उसके बाद से फिर उनकी बातचीत हुई और आज फिर कमेंट्री बॉक्स में दिखता है. सो डोंट टेक देम सीरियसली. आई थिंक संदीप वाज राइट. Okay, we'll leave it at that. And since CS made that remark that nothing much changes except the faces, so he is very fond of Hindi movies, so am I. So I'll just, the end wrap will be that आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं. Thank you for watching, and both of you gentlemen, thanks for your comments. Thank you.